Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. I just want to start by saying you received the media release that we put out a short while ago, confirming that we have postponed the HBL PSL 6 until a later date. As Sami has mentioned, it's a very challenging day for us, a very challenging day for you as cricket lovers, stakeholders, fans of Pakistan cricket who have reported on Pakistan cricket for a very long time, for our global fans, fans in Pakistan, all of the stakeholders and all the players and officials that have been involved. I just wanted to just explain a little bit about the sequence of events that have led us to where we are today. As you're well aware, that the SOPs were put in place for the HBL PSL, bearing in mind that we had delivered 2 test series and also a national T20 where 30 odd matches were played across 2 venues, and also the Qaid Azam Trophy where at any one time we had 12 teams, first 11th and second 11th here in Karachi. It was a great disappointment for us that we have found ourselves in a situation where neither us or others are able to provide what we need to provide, and that is the full protection for players. The health and well-being of all the players comes first and foremost above anything else. We had a discussion this morning with the franchise owners, and we came to the conclusion that it was best to postpone the event. We entered that meeting with the franchises with 1 or 2 possible solutions. One in terms of looking to halt proceedings for 5 days until we were able to make sense of what was going on and see whether we could move forward. There was a strong consensus that it was untenable to continue based on the fact that it was outside of ours and others reasonable areas because of what had taken place. 7 players contracted the virus since the 27th of February. And so for us, that was the most important thing, that once the players start to become affected, then it becomes an issue. And there was a trickle effect of that happening over the last few days. And that for us became a prime concern and was a huge concern for the franchises. Hence we made the decision to postpone the event. We will be looking at other windows, and we hope to play the event at a later time. So what's taking place right now? What's taking place right now is that we are carefully and slowly exiting players from our environment so that we can safely get them out and they can start to travel to wherever they need to travel. In terms of moving forward, clearly we want to continue and finish the HBL PSL 6 as we did with HBL PSL 5, where we found a window and we finished those matches. It's firmly our belief that we will continue to aim to do that and find a window at a later date. We had to deal with a minor breach at the beginning, and we've done everything we possibly could. But with any SOPs for a biosecure bubble, it takes partnerships, it takes discipline, it takes self-policing. And I think that these are really important factors for us, for all to remember. This isn't about a blame game about who's to blame. This is a collective effort that we all had a responsibility to actually police and self-police that environment. Unfortunately, we weren't able to do it effectively enough, hence we find ourselves in this situation today. So with that, I'm happy to hand over to Sami and take any questions. होटल के अंदर हो रही है खिलाड़ियों की, तो आपने ऑप्शन दिया था खिलाड़ियों को कि आप जिसको करानी है वो वैक्सीनेशन करवा सकता है, तो कितने ऐसे खिलाड़ी हैं गैर मुल्की और मुल्की जो वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये कितने खिलाड़ियों का इंतजाम किया गया वहाँ पर आज जो है वैक्सीनेशन जी आज वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है और अभी तक हम 22 लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। हम प्रोसेस से इस वैक्सीनेशन को कर रहे हैं। एक तरीके से हम 30 मिनट का वक्फा देते हैं हर प्लेयर को, ताकि अगर कोई रिएक्शन किया तो वो हमारे सामने हो। वी हैव गिवन अ ओपन ऑप्शन टू एवरीवन।
हम उनको ओपन ऑप्शन दिए कि आप जो करवाना चाहते हैं वो टीम से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि हम उसको करते जाएं। ये प्रोसेस अभी जारी है इस वक्त और अभी नेक्स्ट टीम अवेलेबल हो गई है वहाँ। तो गैर मुल्की खिलाड़ी ने ऑप्शन मंजूर किया है कि वो कराने के तैयार हुए? देखिए उसमें एक सिर्फ कुछ लोगों ने हमसे इंक्वायरीज की है कि गैर मुल्की लोगों ने कि हम ये वैक्सीन करवाना चाहते हैं, हम उनको ऑफर किए कि आप बिल्कुल करवा दीजिए, हम वी आर रेडी टू गिव देम द वैक्सीन। इट इज टू देम कि वो क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब इसी में ऐड में करना चाह रहा हूं। अभी एक डोज है सर, लेकिन 2 डोजेस हैं। बाद में ये सिनोफार्म वाली? अरे यार तो सर अच्छा डॉक्टर साहब इसी में ऐड में करना चाह रहा था, आप लोगों ने वैक्सीन जो ऑफर की वो कल की पीसीबी ने, तो ये पॉसिबल नहीं था कि पहले हो जाता, इवेंट से कुछ टाइम पहले कोई वैक्सीन हो जाती तो ये बायोसिक्योर बबल में भी मतलब आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन इससे पहले हम डिलीवर इन्हीं सब स्टाफ से, इन्हीं लोगों से ये इंटरनेशनल सीरीज एंड डोमेस्टिक क्रिकेट डिलीवर कर चुके हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे हालात भी थे जिसमें वायरल जो लेवल था आपके मुल्क में इससे ज़्यादा था जब हमने ये डिलीवर किया था। जो साउथ अफ्रीका सीरीज, जिम्बाब्वे सीरीज विद ऑल द कंसेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, उसके हमने डिलीवर किया उस वक्त। सो नेवर फेल्ट लाइक कि हम इस वैक्सीन को उस वक्त लगा दें, इस वक्त लगा दें। कोई ऐसा हमें सिचुएशन नहीं थी कि जिसमें हमने ये बिल्कुल कहा कि जी वैक्सीन को हम लगा दें। जब हम बात करते हैं तो अब जिस तरह की सूरत हाल हुई कि जैसे ही आप लोगों ने अनाउंस किया कि पोस्टपोन हो रही है, हमने देखा कि जो फ्रेंचाइज मालकान है वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आ गए और जिस तरह आपने कहा कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सारा लोगों का रुख आपकी तरफ। तो जिस तरह खिलाड़ियों पर आप लोग लागू कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कि फ्रेंचाइज मालकान पर लागू नहीं होता कि जिस तरह आके ओपनली वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि इससे ये तासुर ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फ्रेंचाइज के सामने जो है वो एक नर गोशा रखता है या इस तरह की सूरत है। थैंक यू। देखिए पहली चीज़ ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि फ्रेंचाइजेज हैव बीन बिग इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। जो ब्लेम गेम हो रही है, मैंने कह चुका हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन फ्लाइंग अराउंड एट द मोमेंट। We haven't seen the footage, I haven't seen what's been said, but this is something that will be looked at, no doubt. This is something we will take up separately with the franchises. Like, now is not the time for Pakistan to be fighting. It's not the time to... टूर्नामेंट का बहुत 2-3 घंटे पहले डिसीजन आया, तो इस स्टेज पे इस वक्त हम जहाँ खड़े कितना पीसीबी को लॉस हो रहा है? देखिए ठीक है, जो we've got to remember there's a lot of emotions at the moment. You know, the franchises have invested a lot of money. You know, everybody's invested time in making the HBL PSL work. So there's always going to be a lot of emotion, particularly in the first 24 hours with anything. So, you know, we fully expect that. मैं ये कहूँगा कि जब मैं पहले भी कह चुका हूँ that any environment can only work if everybody's on the same page. And, you know, why did our domestic cricket work? Because it was being policed and everything was being done. You know, we had 30-odd matches across 2 venues. We delivered South Africa. Yes, it was bilateral cricket, but we delivered tournaments with multiple teams involved domestically. And we were able to do that. So, Kiga, the response from the franchises, but this isn't about blaming anybody. This is ultimately about Pakistan cricket. Nuksan ko sabko hua from the result from today. To you, to us, to the franchises, how we're now viewed globally. So there's a lot of work that needs to be done to get Pakistan cricket back up and running, get it to where it has, and let's not forget all the work that's been put in over the last year to get Pakistan right up there in terms of world cricket. There is a huge backlog of matches remaining. Do you think you'll be able to find a window somewhere, because this is consisting of people very busy for Pakistan cricket and world cricket. तो आप किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए विंडोज जो बनाने तो आप बना सकते हो, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। We have got a lot of cricket happening. Player welfare की भी सोचना पड़ेगा, because you know our players, international players in particular, are working hard for their nation and representing their country. But there are windows that we will explore with the franchises to try and make this work. Because it's in everybody's interest that with a postponed event you do everything you can to get it back on. But trust will need to be built. There needs to be better partnership working to ensure that everybody is doing their bit and taking their responsibility to police an environment. और बबल जो है इस पर
काफ़ी बातें हो रही हैं। और आज इंजमाम उल हक जो साबिक कप्तान है, उनका भी एक बयान आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन जिम्मेदारों के खिलाफ जिन्होंने बायोस्फीयर बबल की जो है वो खिलाफ वर्जी की या इसको अमल नहीं करा सके, उनके खिलाफ जिन्होंने क्रिकेट की साख को PSL की साख को नुकसान पहुँचाया, उनके खिलाफ एक्शन ले और सख्त कार्रवाई करे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL की फ्रेंचाइज हो, PSL के लोग हों जिन्होंने क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया, या फिर जो है लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डाला, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, मैं बता चुका हूँ कि इन्वेस्टिगेशन विल टेक प्लेस। PCB इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी in terms of the staff. We're not going to investigate ourselves. So this is a situation that I need to speak to the chairman, and chairman will speak to the board of governors, and then we'll decide in terms of how we investigate this to get to the bottom of where were the issues, where were the problems, where the responsibilities lie. Because देखिए, as I've said before, integrity, accountability is very, very important. Things haven't worked out the way they should have worked out. इसका नुकसान सबका है, तो इसके ऊपर फिर हमें देखना पड़ेगा, और इंशाल्लाह through that investigation we'll have the findings, and then we'll look at how we implement those once we get those. एक्शन होगा? Action देखिए, वो investigation को पहले करने दो, उसके recommendations भी आएंगे, उसके ऊपर फिर that's a decision for the chairman and the board of governors to look at. और से बड़ा चैलेंज तो दोबारा होगा कि जो पिछले डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में एक PCB ने एक अपनी इमेज बनाई थी इवेंट्स करवा के, तो वो उस कॉन्फिडेंस को तो बिल्कुल डेड हुआ होगा। तो अब अगेन उस कॉन्फिडेंस को रिगेन करना, आप समझते हैं कि वो जो मेहनत थी वो सारी पानी में बह गई है इन वाक़यात से? देखिए, ट्रस्ट का इशू ज़रूर होगा, and I think we need to accept that the fans in particular have supported Pakistan cricket through tough times. You supported cricket through tough times, and as our players have at a national level and domestic level. So building trust again is going to take some time and take some effort, but we're determined to learn from the mistakes that were made. Hopefully everybody will learn from the mistakes that were made from this, to make sure that this kind of thing doesn't happen again. ये लॉस फाइनेंशियल तो हम बाद में कैलकुलेट करने जाएंगे, ये लॉस तो इस वक्त हम सब का है, फैंस का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, आप सब लोगों का है, फ्रेंचाइजेस का है, स्पॉन्सर्स का है। सो जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो तो when we will go back to the drawing board, we'll look at the contracts, we'll look at the clauses, then we'll go into understanding कि हम financially कहाँ बैठे हैं। So इस वक्त तो हम we just trying to do as Wasim साहब said, our first duty right now is कि हम अपने players की, हमारे जो international players हैं, हम उनकी safety, security और उनकी health को मद्देनजर रखें, और पहला हमारा step वो होगा। ये हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आपने बात की कि बायोस्फीयर बबल में कुछ टेस्ट पॉजिटिव आ गए। हम मैक्सिमम इसको कोशिश करें कि एक बाउंड्री है साथ ये। सो आपने जितना मैक्सिमम कॉन्टैक्ट आप काम कर सकते थे आपने किया है, जितना मैक्सिमाइज आप कर सकते थे, यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब किया आपने बायोस्फीयर बबल के लिए किया होता। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, और बिग स्पोर्ट्स में ये हुआ है पहले भी, जितनी भी दुनिया की स्पोर्ट्स हैं उसमें भी ये पॉसिबिलिटीज पहले भी